Okay, let's start the class. So this is the third class of physics optional PYQ discussion. And today we are mainly focusing upon these topics. So let me use other color. That is application of rotating frames, centripetal and Coriolis acceleration, motion under central force, and conservation of angular momentum, Kepler's law. Kepler's law. So are you getting it? It is a very around 1, 2, 3, 4, 5 topics, right? So how the nature of the question has evolved, first we will see that, and then we will come to the discussion of the question. So till 16 we have done in last lecture, है ना? So see, now one thing that you should note here, that they have asked something, how does one obtain angular velocity of Earth around this? So again, it's a standard question. Standard question. Derive the expression for Coriolis force so that the force is perpendicular to x rotation. What is the nature of force? Both of them are standard question. Now, what I mean by standard question, that is in your notes. These topics are in your notes, and you are expected to remember them by heart, right? See, let me tell you one thing. Even for the quantum Yoga students, that the blunder that they make is they start running behind the numericals, and that too tough numericals, without remembering the formulas or the derivation, right? So first complete the derivation and formula. If they are on the fingertips, then attempt 10 years PYQ. This is the bare minimum. This is the bare minimum. If you're giving the examination, this is the bare minimum derivation formula plus 10 PYQ. Then if you have time, then go for numericals from the standard books and PYQs. Okay. Now coming to the next question. Next question is from this topic, coldest topic. Is is this one. This is what they have asked in 2022, and this question is again what? A basic numericals. You will see that kitna आसानी से solve होता है basic numerical. So you need to understand that from centripetal and Coriolis oscillation, right? From application of rotating frame, they are asking only basic. Sir, your sound not much loud. बाकी लोग सुनाई दे रहा है सबको? All good. Okay. See, understand. So if I have to categorize that, what all should we study? Application to rotating frame, centripetal and Coriolis oscillation, right? From these, if you see in our notes, right? Again, these lectures are common for everyone, foundation batch students also. So try to understand this thing, that whatever in our notes, that is more than sufficient for handling these questions. Again, one thing, when I say the evolution of the question, how the question has evolved, you need to know to do the bare minimum. Now, bare minimum is for those people जिनकी mechanics खराब है, whose mechanics is not up to that mark. Those who will focus on the bare minimum. Now, coming to the two-body problem, reduce mass, motion under central force, conservation of angular momentum, Kepler's law. Two-body problem and reduce mass, generally they are not asked any direct question, but उनको एक साथ लिखा जाता है. So coming from it, conservation of angular momentum, see what they are asking. Just see the question, nature of the question. A charged particle is moving under the influence of point nucleus so that orbit is ellipse. Find the time period of its motion. Again, it's a standard question. Yes or no? Topic name is orbit analysis of a. अरे बता दे भाई. Orbit analysis of inverse square law attractive force. Yes or no? Just see this question. 14, they've asked same thing. An electron is moving under the influence of point charge in 2022. Are you getting it? उसके बाद तो नहीं पूछा उन्होंने. Now, coming to this question, a body is an inverse attractive force. Find the time taken by body to traverse. Now, this is an applied numerical.
दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि सिर्फ नोट्स पढ़कर नहीं हुआ होता, दिस नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, सो देखना कितना क्वेश्चन है। एक्सप्रेस एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऑफ द मास सिस्टम, अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन। A particle of mass m is in central force, then show that the path must be plane curve where r is unit vector along the position vector. Standard question. What is central force? Give two examples of central force so that angular momentum is constant in the motion. Again, what? Notes. A particle moving in central force, describe this path where k, again, this is a numerical, but this numerical is a common numerical. समझ में आ रहा है? This numerical is not very common numerical, but this is a very common numerical. Even if you have solved from any book I'm telling you, अगर तुमने पढ़ा है from any coaching, any book, anywhere, you must have solved these types of questions where r as a function of something is given and you have to find the force law, right? So out of these 10 questions that we are going to discuss today, those pertaining to syllabus I have already told you, from application to rotating frame to central force motion, out of 10 questions only 2 questions of numericals has been asked. Out of 2 questions only one question is again standard question that will be you find everywhere in any book. One question is there that you can categorize as a medium question as per UPSC level. Again ये question बहुत ही आसान है, but from the UPSC perspective जहाँ पे 9 question standard are out of 10, you can say that कि this one question is like that. So you have to prepare accordingly. ठीक है, if it is your weak portion, please prepare like this only. Yes. Slow. How many of you did this question? Although ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, but try to understand how does one obtain the angular velocity of Earth about North Pole with respect to a fixed star? Explain your method. सबने क्या किया है? Omega is equals to 2 pi by t. T क्या होता है? 24 hours. आंसर वही आएगा. Yes. How many of you did this thing? Please raise your hand. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो सीधा निकाला ऐसे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और टी तो पता है 24 आवर्स है, सो 2 पाई बाई 24 आवर्स. आंसर यही आएगा, एग्जैक्ट ये आंसर आएगा. बट क्या इस एक लाइन के लिए तुम्हें 10 मार्क्स दिया जाएगा? यू विल नॉट बी गेटिंग 1 मार्क्स. समझ में आ रहा है? ठीक है, सो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट? यू हैव टू एक्सप्लेन योर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द अबव वैल्यू. ये वैल्यू निकालना थोड़ी, तो वैल्यू खुद दे रखा है उन्होंने. ये डिवाइड करना 30 सेकंड का, वो थोड़ी तुमसे पूछ रहे थे. एक्सप्लेन योर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अबव वैल्यू, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट सम ऑफ यू माइट हैव स्टडीड विद. कब का पढ़ा है तुमने? कुछ लोग तो पढ़ते होगे इसमें रोटेटिंग फ्रेम वाले में. आई जनरली टीच, मैं भी एक साल कभी मैं पढ़ाता हूँ रोटिंग फ्रेम में, कभी मैं पढ़ाता हूँ उसको रिजिड बॉडी में. जब मैं पढ़ाता हूँ अर्थ को, अर्थ एज अ स्फीयर, अर्थ एज अ स्फीयर जब मैं पढ़ाता हूँ, तो आई डील विद द फोकट पेंडुलम. ठीक है, व्हाट इज अ फोकट पेंडुलम? फोकट पेंडुलम इज अ simple pendulum having a very good very heavy bob suspended by a very long wire having equal degree of freedom of motion in every direction. Now try to understand. जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होती है ना, उसी पेंडुलम को हम क्या बोल रहे हैं? फोकट पेंडुलम. बस अंतर क्या है? ये कहीं भी स्विंग कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है रोटेट, अंदर बाहर भी रोटेट कर सकती है. समझ में आ रहा है? एक बॉब ले लो, ठीक है, एक पत्थर को बांध दो रस्सी से और हाथ से लटका लो, वो किधर भी ऑसिलेट कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में. ये सुनो, अगर ये तुम्हारा प्लेन है तो वो ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी. ये सुनो, दिस इज माय फोकट पेंडुलम. व्हाट इज सो खास अबाउट दिस थिंग दैट कि ये बहुत हेवी मास होता है और वायर बहुत बड़ी होती है. ठीक है, नाउ कंसीडरिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ विद कांस्टेंट ओमेगा. ये तो लिखने का तरीका होता है कि ओमेगा कांस्टेंट मान लिया हमने अर्थ का. अब देखो, ये समझो, हम लोग अर्थ पर बैठे हैं. नाउ फ्रॉम द अर्थ, दिस इज द पेंडुलम जो अंदर बाहर कर रहा हूं स्विंग. आई हैव ट्राइड टू डिमोन्स्ट्रेट विद द प्लेन. इफ दिस इज माय प्लेन, नीचे वाला, ये प्लेन किसका है? पेंडुलम का. तो समझ में आ रहा है? इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन. ठीक है, अब व्हाट विल हैपन नाउ एज वी आर ओमेगा से मूविंग, so what we will see from the relative motion that this pendulum is omega से moving in opposite direction as the earth moves from east west to east. अरे भाई, हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट. तो हमें सामने वाली चीज क्या दिखेगी गियर से मूव करते हुए? सामने वाली चीज कैसे मूव करती हुई दिखेगी? इफ यू आर ऑन डिस्क, लेट्स से, अंडरस्टैंड, and this is rotating like this omega.
So how will you see this disk? तुमको लगेगा तुम रेस्ट पे हो and this disk is rotating like opposite to you. Yes, very good. So it will feel that this pendulum is moving from east to west. We are moving from west to east, opposite of the rotating motion, east to west. Now, considering the xy as the horizontal plane has east in direction, समझ में आ रहा है ना तुम्हें ये सब चीज है ना, इसको x माना इसको y माना. This is, remember, if you have attended any of my lecture, I have already told you that please make sure your omega is omega cos lambda j, omega sin lambda k cap. If you consider these direction, this will be your omega. Okay, and you can use directly. Now, what will happen? The pendulum is kept vertically in the northern hemisphere. Vertical component of angular component will try to deflect the pendulum by applying Coriolis force. Yes, if it is moving for the earth, Coriolis force will apply. Now, what will be the Coriolis force acting on it? Okay, so we will understand. Try to understand this figure. ये समझने की कोशिश करो. What is happening? What is happening? This is my pendulum. Now this pendulum is oscillating as well as rotating. क्या कर रहा है? It is oscillating and oscillate करते करते ये rotate कर रहा है. I don't have अभी camera to show you. मैं दिखाता तुम्हें. It is rotating also. ठीक है? So that means इसको देखो ढंग से, यहां समझो चीजें. Here you will understand that it is oscillating and rotating, फिर oscillating, फिर rotating, oscillating, rotating, oscillating, rotating. So the path that we will see here, वो कैसा होगा? ये यहां से स्टार्ट किया, देखो मैं प्लेन बना रहा हूं, ये यहां से स्टार्ट किया, ऑसिलेट करता तो सीधा जाता, बड़ी रोटेट भी कर रहा है, ये सीधा जाकर फिर घूमेगा, फिर ओमेगा से घूमेगा, फिर घूमेगा 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 गोल गोल घूमेगा. Yes or no? After how many time? Let's say it start from here, right? It started from here. ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, right? It will revolve and rotate. After how much time it will come back here? कितने टाइम के बाद आएगा? जितने टाइम में अर्थ का एक रोटेशन होगा. Yes or no, everyone? अरे इट इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. यस और नो? अर्थ से हमको हमें दिख रहा है कि वो रोटेट कर रहा है. दैट मींस जितने टाइम में अर्थ घूमकर आएगा वहां पर, उतने टाइम में ये भी वापस घूमकर वहां आएगा. यस और नो? नाउ इफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग, सो व्हाट, हाउ वी कैन डू दैट? हाउ वी कैन डू दैट? दैट द टी ऑफ पेंडुलम वी कैन मेजर इट. ये तो मेजर हो गया. अगर ये मेजर हो गया तो ये भी मेजर हो गया. नो, यू शुड माइंड इट. We should not tell randomly कि T equals 24 hours. We know that कि Earth 24 hours. Why we know that कि T of Earth is 24 hours? Because we are watching this pendulum, and by watching this pendulum, we can measure this thing in the laboratory. And when we have measured this thing, it is coming out to be T equals to 24 hours. Everyone understood or not? Everyone understanding not? जल्दी बताओ. इस क्वेश्चन में जरूरी है क्योंकि पता ही नहीं चलता क्या लिखना है ना? Now equation of motion we can write because it is moving in theta direction. देखो, it is moving in theta direction, so I'm writing the deflection is what? In theta direction. Mind it, ये rotate कर रहा है, that means deflection is in theta direction. So a theta is equals to r theta double dot to r theta dot. Theta is constant, so what will happen? This will become 0. Sorry, this will become 0. So a theta equals to 2 r theta dot. Put it. What is f Coriolis? 2 mv sin lambda. Just compare them. 2 mv sin lambda is equals to 2 r theta dot. 2 से 2 खत्म, right? और ये तो f है ना, इसमें m करेंगे, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? m भी खत्म, तो क्या आएगा? r theta dot is equals to v omega sin. r dot से v भी खत्म, so theta dot equals to omega sin lambda. Theta dot equals to omega sin lambda. What is theta dot? It is 2 pi by theta. That is T equals to 2 pi by omega sin lambda. Now mind it, this is time period of Earth, which is equals to time period of pendulum, and we have calculated time period of pendulum, which is coming out to be experimentally 24 hours. That's why I'm writing it 24 hours. Now, अब देखो कैसे करेंगे? It is T equals to 2 pi omega sin lambda. So when we put, because we have to find at North Pole, lambda pi by 2, अब देखो 2 pi by T, आंसर हो ही आएगा. So using Foucault pendulum, we can find the angular velocity of
Earth about North Pole with respect to a fixed star, it also reinforces the non-inertial nature of the Earth's frame. Now, question को फिर से पढ़ो. What was question talking about? How does one obtain angular velocity of Earth about North Pole? North Pole means simply that lambda is equals to pi by 2. We have to put it with respect to a fixed star. This fixed star is what? Generally our sun. And why this fixed star is important? We are saying Earth is rotating with omega and which is constant. तो भाई किसके फ्रेम से ओमेगा घूम रहा है? Someone has to verify this thing कि this Earth is moving as omega. तो कौन बताएगा? With respect to sun, it is moving at omega. If you are on the surface of the Earth, you will say कि Earth कहाँ move कर रहा है भाई? Do you feel that Earth is moving? No. So from the Earth, sun, it is moving. Have you understood this question conceptually? क्या है? न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे और 10 मार्क्स के हिसाब से क्या लिख कर आएंगे एग्जाम में? You should get maximum marks. Understand everyone? बताना होगा भाई. This is one of the question जो बहुत फ्लोट करता है टेलीग्राम चैनल पे. मतलब sometimes I see बच्चे परेशान रहते हैं इस पे कि what is the answer. ठीक है? So this is this. Now, is it in your syllabus? Earlier, forgot pendulum was in your syllabus, but no, not now. ठीक है? So ठीक है, but still it is a important portion to cover. ये cover होता है, हर बार cover होता है. चलो, derive the expression for Coriolis force so that this force is perpendicular to the velocity axis and what is the nature of this force? Now, 10 marker. We have to understand one thing that whenever we are dumping any formula, we have to write the basic derivation from that. So first we will define what? In introduction, we will define Coriolis force. Now definition should be complete. What a complete means that it should get maximum information in minimum words. So Coriolis force is a pseudo force, first line, which produces deflection of particle, which is moving with respect to a rotating frame. So if a particle is moving with respect to a rotating frame, then only it will act and it will produce deflection of the particle. Okay? Now understand, considering frame x dash y z z dash, ये तो शायद सबको पता होगा, है ना? We can write that dc by dt is equals to this formula we can write for when we see any vector from a rotating frame. So from this one, because it's a basic formula, we can start. अब इससे भी बेसिक जाओगे तो 10 मार्क्स में लिख नहीं पाओगे. ठीक है? So please try to understand, try to make a marker कि what we define as a basic. So we'll define what is dc by dt, rate of change of c in inertial frame. ये फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है? आई होप एवरीवन नो दिस फॉर्मूला. dc by dt रोटेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ c इन रोटेटिंग फ्रेम, ओमेगा क्रॉस c. अब तुम्हें समझ में आएगा. नाउ व्हाट वी विल डू, considering r as the position vector of the object in the inertial frame and putting in equation 1. Now you to understand, we have to find a, but how we find a? We have to find v. How we find v? Using the r. So this has to be followed because equation of motion is our syllabus and we have to follow that hierarchy. Okay, we can use this vector relation. It is what? It is some kind of vector relation. Just like you know that a cross b की वैल्यू क्या होती है, a dot b की वैल्यू क्या होती है, a cross b cross c की वैल्यू क्या होती है, something like that only. Vector seeing from two different frame. Now if you put r, what will be? c की जगह r put होगा, dr by dt क्या हो जाएगा? Velocity in inertial frame, dr by dt rotational velocity in rotating frame into omega cross r. It is my second equation. Now what I'm doing, just put this equation again in this equation. And c to is any vector, so c can be v also. So if you put here dv in by dt, what will it become? It will become a inertial, dv in by dt rotational omega cross v in. Now let's just put the value of v in जो हमने यहाँ निकाला है. What will happen? It will be v rod into omega cross r into dt. ठीक है? डिफरेंशिएट करने तो आता ही सबको, है ना? d omega v rod by dt, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? a rotational, d v rod by dt in rotational frame. So everything rotational, that means it is the acceleration in rotational frame. ठीक है? Now omega cross dr by dt plus d omega cross dt, omega cross dt, ये वैल्यू को हमने एक्सपेंड कर दिया है. ठीक है? When you put it here, you will come to this one, omega cross v rotational plus d omega by dt into r plus omega into v rotational plus omega cross omega. उसको हमने यहाँ लिख दिया. We have find out a rotational here. इन सबको उधर ले जाओगे, it will become minus.
Now tell me one thing. Everyone tell me one thing. Is A rotational is a pseudo force or not? मतलब pseudo force के लिए मैंने पूरे को मास से मल्टीप्लाई कर दिया. सुन लो. ठीक है. धरना मत दे देना कि भाई आप ए को कैसे फोर्स बोल रहे हैं. मैं I'm just multiplying this all with mass m. Tell me how many of you think that m into a rotational is pseudo force or not pseudo force? Yes, no भेजो. Yes for yes, no for no. Or you can use your mic also, yaar. If you're coming live, you can interact as well as ask your doubt also, है ना? So please tell me. अभिषेक से आई थिंक नो. आईपैड भाई अपना नाम तो बता दो यार, या तो उसमें ही लिख दो कि समझ में आए. अब आईपैड बोलूंगा अच्छा तो ही लगेगा. दिवाकर नो. यस इट इज हिमांशु. लास्ट टू कंपोनेंट आर सूडो. लास्ट टू कंपोनेंट आर सूडो. देखो चलो समझो, समझते हैं हम लोग. What is a pseudo force? Pseudo force, basically I tell that pseudo force is nothing. It is just a mathematical correction factor which is arising due to the relative motion of frame and observer, where frame is moving with some acceleration. हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं और उस एक्सेलरेशन के कारण हमें क्या दिखता है, सामने वाला व्यक्ति एक्सेलरेट करता हुआ, तो हम बोलते हैं कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है. दैट इज pseudo force, है ना? बट दैट इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स. ठीक है. दिस ए रोटेशनल इनटू एम, इट इज नॉट अ सूडो फोर्स. This is coming from F equals to ma. F rotational equals to ma rotational. We are simply applying second law for a constant mass system, obviously, right? And to make this happen, we have to do these things. समझ में आ रहा है? It is not equals to, you can see that ma rotational is not equals to ma inertial. So to make it happen, we have to do some mathematical correction factor. ठीक है. So this is not pseudo. This तो पता ही तुम्हें, inertial है, not pseudo. बाकी सब का सब pseudo है, not just two terms. बाकी सब का सब क्या है? Pseudo. First one is what? नाम क्या है इसका? Coriolis force. भाई मैं m लगाकर बात कर रहा हूं. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड. फर्स्ट इज Coriolis force. सेकेंड इज माइंड इज साइन. माइनस माइनस और यहाँ प्लस है. साइन को माइंड करना प्लीज. सेकेंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल. थर्ड वन इज यूलर. नाउ माइंड इट. पता नहीं मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया है. यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने नहीं लिखवाया है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ. दिस Coriolis force, when we are on a rotating frame, that is, it is a non-inertial frame. Non-inertial frame. The very condition is that कि omega is present. When omega is present, which force will acting? Please write in your notes. देखो मैंने यहाँ पे मॉडल आंसर बनाया है. I have, क्या बोलते हैं, shortness of space. So omega is just due to the present of omega. Which force will act? Which force will act? Everyone. सिर्फ कोई घूम रहा है, मुझे नहीं पता कैसे घूम रहा है, क्या नहीं घूम रहा है. Just possessing omega. Which force will act? Very good, Abhishek. It's centrifugal. So first you need to understand, just by the virtue of angular velocity, you will have this one. दिख रहा है? It only depends upon omega. अरे r तो होगा ही होगा, समझ रहे हो ना? अगर r वेक्टर नहीं, इसका मतलब क्या है? तुम खुद को ही देख रहे हो, है ना? If r is 0, that means position of that position point from yours is 0. So just by the virtue of having omega, it is this. ठीक है? Now, if omega is not constant, then you will have Euler force.
if you have omega, you will definitely have centrifugal force. Now the two cases arises. Omega is constant, omega is not constant. So in this case, you will have Euler force. Here, no Euler force will act. One more thing acting. With omega, can we have particle motion? If particle motion is there, then it will act. Then Coriolis force will act. Otherwise, Coriolis force will not act. तो यार तीन सूडो फोर्स लग रहे हैं. पहला लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल क्योंकि वो घूम रहा है. दूसरा लग रहा है यूलर क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म घूम रहा है. और तीसरा लग रहा है कोरिलेस क्योंकि वो तो घूम ही रहा है बट उसके रिस्पेक्ट में भी कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है. So I can write simply the 2 minus omega is gives the Coriolis force. For Earth, we treat omega as constant. So F Coriolis depends upon the cross product of omega cross v. That is F dot v as well as F. That means Coriolis force is perpendicular to the velocity as an axis of rotation. पूछा था कैसा नेचर है. एक तो नेचर मैंने यहाँ लिख दिया. Second nature is what? It causes only deflection in the path of the object. Please not open your video. भाई वीडियो बंद कर लो. Sam. ठीक है everyone. Like deflection of air mass, formation of cyclones, gyroscopic precision, united. Done everyone? Done. हाँ. सर जैसे इस क्वेश्चन पे अगर आपका रैंकिंग थोड़ा छोटा है तो जैसे आप फोर्स इंडिविजुअल बता रहे हो वैसे कंक्लूजन में हम लोग बता देंगे कि जो लास्ट इक्वेशन आप बताए कि ये वाला टर्म फोर्स है ये वाला कोरियोलिस फोर्स है ये वाला. भाई अगर सुनो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देनी है हमें देनी है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? कोरियोलिस फोर्स को. उसके लिए जब डिस्कस करना है उसके बाद अगर स्पेस और टाइम बचता है तो जो मर्जी लिखो कोई दिक्कत नहीं है. बट मेरे हिसाब से नहीं बचेगा. ठीक है क्योंकि मैंने ये जो बॉर्डर बनाया ना दिस बॉर्डर इज लेसर. इससे ज्यादा बॉर्डर होता है यूपीएससी में. मतलब कम स्पेस मिलता है लिखने के लिए. एक फैक्टर और भी है कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी छोटी है और वहां पे तुम थोड़ी सी बड़ी लिखोगे तो मोटा मोटी जितना मैं लिख पा रहा हूँ 2 पेज में उतना ही तुम लिख पाओगे. उससे ज्यादा लिखने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. क्लियर है? इफ यू हैव टाइम यू राइट कोई दिक्कत नहीं है. जैसे इसमें मैंने लिखा ये 15 मार्क्स का है लिखूंगा मैं इसमें. सो दिस क्वेश्चन this PDF will be share on the course. जो कोर्स चला अरे ये कोर्स फ्री है भाई मेरे. इफ यू आर वाचिंग इट ऑन दी YouTube डिस्क्रिप्शन में है. ऐसे यूट्यूबर बोलते हैं ना. हाँ बाकी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने भेजा तो है यार लिंक BITLY वाला. BITLY स्लैश कर दो फिजिक्स ऑप्शन सब स्मॉल में. उसका लिखना PYQSL सॉल्यूशन PYQ bit.ly ये. अदरवाइज जो क्वांटम वाइज का टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल रखा है. Now coming to this one. Consider two forces, two frame S and S dash having common origin. The frame S dash is rotating with respect to fixed star S. ये जो भी given है. क्या पूछ रहा है? Calculate rotating frame S dash में following force: Euler force, Coriolis force, centrifugal force. Now these all forces are given. So किस फोर्स को हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? अरे कोई बात नहीं सैम, अच्छी बात है तुम घूमते घूमते पढ़ाई कर रहे हो. वेरी गुड. देखो सो सूडो फोर्स these all are pseudo force, so that is common between all three of them. So we will start introducing by this one, that pseudo forces are mathematical correction factor, mathematically equivalent to force but not real interaction. ठीक है. See, this is my self-made definition. Self-made definition based on my knowledge and where I have get the knowledge from books and internet, है ना. But यहाँ पे exactly जो मैंने है अपने लाइन लिखी है. It is expressing myself. So one thing you should also note that please define in your language. Trust me, बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है for the evaluator. ठीक है. Applied from non-inertial frame to apply formulas and principles of motion in non-inertial frame. Is it complete or not? Definition is complete or not? It might take a few more words to write it. It not be looking like bookish or copy paste item. But is it complete or not? It's complete, yes or no? So try to make like this one. Now again considering XY frame dc by dt सबको सेम करेंगे. क्या आएंगे? लास्ट में इसी फॉर्मूले पे आ जाएंगे. When we boil down to this formula, what we will do, we have to find Euler force. तो सीधा तुम लिख नहीं दोगे 0 है. Are you getting it? 15 मार्क्स का है.
we have to respect the page, है ना? So you will define it. It is a fictitious tangential force. Mind it. Omega crossed R. Tangentially लगता है. If we analyze the motion from any non-uniform rotating frame, reference frame, mathematically it is this, right? Omega is constant, so obviously it will be 0. So no uniforms will act. What I am doing it, सुनना अच्छे से. They have asked this numerical. क्योंकि I have seen many copies. ठीक है? I have already told you that you should be इतना ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे. Almost 600 questions are there that we are doing in this series, है ना? You will get a knack कि how to write the answer and also to evaluate it. कौन ज्यादा कौन कम. So here they have asked only the value. What we have written? We have written definition plus we have calculated the value and again we have commented on the value. This is what a complete answer should look like. Not only in the broader aspect, you have introduction, body, and conclusion, right? But on the mini aspect also, you should have mini introduction, mini body, and mini conclusion. If you have space and time, again, समझो इस चीज को, स्पेस और टाइम हो तब ये सब चीज फायदेमंद होता है और आंसर सही हो तो. अभी तुम इतना तामझाम कर लो लिख दो कि भाई यूनिट फोर्स आया 5 न्यूटन, तो इस तामझाम का कोई मतलब नहीं है. ठीक है? Coriolis force, again pseudo force which produces deflection of particle which is moving with respect to rotating frame. Again shorter definition, so put it -2 m. m कितना given है? 1 unit, 1 unit put किया. ax for a. अब देखो यहाँ पे i cap j cap मत ले लेना. UPSC has asked in this way that they are writing it ax and ay. There is a concept of bases that e1, e2, e3 all are the bases of a frame. So अगर if you have n dimensional, so you have e1, e2, e3, so on. If you have 3 dimensional, you have e1, e2, and e3. That is basically nothing. Ax, ay, and az. So they all are acting like ax is working like I cap, ay is j cap, and this is k cap. तो दिमाग में subconsciously वही चलना चाहिए. But when you are writing it, not write I, j, k cap. Always try to write how the questions has been asked. So the put it into 3 into 2, 84, right? X cross y, j, you know that, है ना? So as just mentioned, object will be moving in y direction, but the force will reflect in the z direction. Why? Because the force is acting in z direction, object was moving in y direction. So it's a clear cut that it is acting perpendicular to the force. You can also write one more line that it is acting perpendicular to the force, so it will only produce deflection, not change in velocity. There can be multiple way of interpreting. I'm just putting my expression. So centrifugal, it rises due to the observation from a rotating frame reference. Just if you put it m omega cross r 3ax, I hope इस क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत तो नहीं होगी तुम लोगों को, है ना? So what I have concluded at the last, देखो मैंने सबका conclusion कर दिया था. Last, on seeing motion from rotating frame, we encounter various forces whose nature depends upon nature of rotating motion as well as particle motion. Are you getting it? So in the introduction, just watch my introduction and conclusion. In the introduction, I have combined all these 3 things that was asked in the examination. And even in the conclusion, I have again combined all these 3. Okay? So just try to learn these things. Chalo. Done, everyone? Yes, no? Now, question number 20 is a basic derivation, right? Now, what you should understand here, I know everyone knows the derivation, right? But how much you have to write and how much you can leave, that you have to understand it here. And again, one thing that you should take from this lecture, that you have to mug up the derivation. ठीक है? Derivation रट्टा मारना है. ठीक है? अपने हाथ पे कहीं ना कहीं लिख लो. Derivation फॉर्मूला फिंगर टिप्स होना चाहिए. समझ आ रहा है? सामने चिपका लो जहां पे स्टडी टेबल है कि I will not qualify or I will not score more than 300 if derivation and formula is not my fingertips, right? It is the basic condition, not is sufficient but necessary condition. ठीक है? So मैंने बताया था तुम लोगों को कि PYQ 10 years PYQ plus derivation and formula at fingertips. This is the necessary condition to score 300 plus marks. Sufficient अभी भी नहीं है, but necessary जरूर है. Now, a charged particle is moving under the influence of point so that the orbit is ellipse. Find out time period of the motion. समझो चीजें. कितनों से ये क्वेश्चन हुआ है और कितनों से सब कुछ हो गया, टाइम पीरियड नहीं निकला है. और कितनों से टाइम पीरियड निकला है
तो वो ऐसे लिख कर आए हैं टी स्क्वायर समथिंग ए क्यूब वाला फॉर्म में, वेयर ए इज मान लो कुछ है. How many of you have solved this question? Please raise your hand. अभी टाइप पेड दिखाऊंगा, बताना कितनों का ही टाइप पेड आया था और कितने लोग सिर्फ के प्लस थर्ड लॉ लिख कर आ गए थे. माइंड इट, 90% ऑफ द स्टूडेंट दैट आई हैव सीन लास्ट, ये तो क्वेश्चन 14 का है ना यार, बहुत बार मैंने टेस्ट सीरीज में पूछा है ना, या डेली आंसर टीम करवाया है. बच्चे जो है इसमें लिख कर आते सॉरी, के प्लस थर्ड लॉ का रिलेशन लिख कर लाते हैं. ठीक है, not for this. So force is said to be central if it satisfies two conditions. First, magnitude is function of distance between, that is if this is the center of my force and if it is my particle, right, if it is my center, this is my r vector. So अगर जितनी डिस्टेंस इसकी है r, इस पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, मतलब दूर जाने पे और पास आने पे it will increase or decrease and its direction is also along this line, then we say that it is a central force, right? Now motion of a charged particle considering electron, ऊपर वाले को देखो, under the influence of a nucleus having ZE, such that force is what? Minus k by r square. You have done the derivation और I have also shared the mechanics notes ना सब for everyone, मैंने शेयर किया था उस टाइम पे स्टार्टिंग में. Inverse square law. What is the trajectory in inverse square law? This is the same thing, right? Put the value. Now अब देखो कि कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है. इसमें दो चीज पूछा गया है, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द मोशन. ये भी एक पेज ले लेगा. How many pages will we get in 15 marks? We will get only 3 pages. So how many pages we can utilize for the first part? 2 pages only, and that too we cannot dump any equation. जब तक जान है तब तक we can write from the very basic. Let's start from the very basic. How you write? इसके लिए क्या जरूरी है? डेरिवेशन रट्टा होना, नहीं तो नहीं लिख पाओगे इस चीज को इस तरीके से. So considering r equals to 1 by u, this yes or no, where symbols has the usual meaning, मैंने पहले लिख दिया क्योंकि सबको पता है क्या है. We are not defining each and every variable, although you should either define variable or write this statement. This is a Brahmastra statement for these things. सब पाप हो देता है ये. So r equals to 1 by u, this is what? Radial equation. This is what? Tangential equation of motion. So using these two, what we get? This. Yes or no? Everyone. भाई हमें तो इसके और आगे जाना है, but directly लिखना, we know that differential order of motion is this. Please avoid that. Why? Because this is your basic assumption कि r equals to 1 by u है, and these two are basic equation of the motion of a central force. अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स मोशन कर रहा है तो these are basic equation. ये 3 लाइन लिखने में तुम्हारा क्या जा रहा है? लिख दो, उसके बाद ही लिख दो. It will make a flow of your answer. Now solving for u we get ये. अब यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. If you see the classes, जो क्लास में हमने क्या किया है, इसको पूरा सॉल्व किया है, 4-5 लाइन में सॉल्व किया, वो 4-5 लाइन स्किप करेंगे, राइट? इज कमिंग टू बी 1 by r is equals to a cos plus 1 by r naught. ये क्या होता है तुम्हारा? r naught होता है. खैर, so if you divide it by L square by mu k r, so it is r naught by r. We treat it as r naught also. 1 upon a. ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, इसको मैं समझा यहाँ पर नहीं सकता. Why? Because it is in your notes. Please check that notes. ठीक है? We have skipped many steps. So this is what you will get if you solve this equation. What? Why? Because you're solving with the u. Now we know that what is the energy? Translational, rotational plus potential. Yes or no? What is the potential? Minus k by r. If you put it here, right? Now we have to find the energy. What is u? U is 1 by r, a cos theta minus theta mu square. Now r dot is what? Just we have differentiated r. अब देखो यहां से यहां पहुंचने में भी also we have 2 लाइन. मैंने क्या किया? खा गया. We have eaten up this step, right? Because differentiate करना तो तुम्हें आता है, and examiner is not interested कि whether you can differentiate it or not. So you should better याद कर लो उसको. Now if you put it in this equation, E is equals to a square minus mu square, that is a equals to this. If you put the value of a, this is what you get, and that is what? It is the equation of the orbit of a plane, that is conic section. How many of you have seen this equation before? कितनों ने देख रखा है इस equation को? Just raise your hand.
भाई इट इज इन योर सिलेबस, ठीक है। इफ यू हैवंट सीन दिस डेरिवेशन, बहुत बुरी स्थिति में हो फिर, ठीक है। मतलब एवरीवन शुड नो दिस, मतलब ये सिलेबस में भाई, इसको तुम यू कैन नॉट स्किप इट, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक एफ इक्वल्स टू एम, जितना इंपॉर्टेंट उतना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। Now from here, this is what we define as eccentricity. Now eccentricity is something which define our curve, and E, it depends upon E. So E is the eccentricity of the conic section. In our case, the attractive potential total energy is negative. Hence, E will be less than this, which will be ellipse. अब जो कुछ लोग बोल रहे थे सर, how we find out E? Not needed. You know that it is attractive, and when attractive force is there, potential is there, E has to be negative. This is the condition of any attractive force. समझ रहे हो? This is the basic condition of attractive force, that net force should be less than zero, otherwise it won't be attractive. So when E is less than zero, small e will be what? Less than 1 and greater than 0. रूट है तो भाई हमेशा पॉजिटिव ही होगा और 1 से छोटा है. So what does this signify? It signify ellipse. अब now you will tell me, sir, here also I can write E, it depends upon E, where E increases, E changes, all those things. Yes, you can write it. If you have space, just write it. But I don't think you have no space. ठीक है. और वो फालतू चीजें लिखने से अच्छा है कि हम मैथमेटिकली जो है उसको और पावरफुली लिखते हैं, ठीक है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैथमेटिकली पावरफुल लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than तुम रैंडम एप्लीकेशन और कुछ भी लिखते चलो, ठीक है. that will not help. So this is 2 pages we have, and we have to finish in 2 pages only. Now time period देखो, can I write 2a is equal to r minimum into r max? यही तो होता है भाई. इफ दिस इज योर फोकाई, यहाँ पर अगर सन है और अर्थ घूम रहा है चारों तरफ से, या इफ दिस इज योर फोर्थ सेंटर, ये पता है ना, पेरिजी एपोजी है ना, आर मिनिमम आर मैक्सिमम. इफ यू ऐड देम व्हाट विल हैपन? इट विल इक्वल्स टू 2a. if equals to 2a, we can take r naught 1 minus 1 epsilon. So it is coming out to be 2 r naught by 1 minus 1 epsilon. What was r naught? I have already discussed there. L square by mu k. E we have already discussed, right? So what will become a? So if you put the value here, a is what? A is r naught 1 minus e naught. Just put the value from here. You will get that a is equals to minus k by 2e. ये भी standard derivation है. A is equals to minus k by 2e. ठीक है. नाउ अब वी विल डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि टी ए क्यूब है, हम लोग थोड़ा और पीछे चलेंगे, लिखेंगे एज एंग्लो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वी कैन राइट टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्बिट वाज पाई ab by d by dt. What is d by dt? It is L by 2 mu. What is b value? A into 1 minus e square. These are the basic चीज मैंने बताया था क्लास में, बताया हर बार. And those who are new or watching it on the YouTube or other platform or not the student of my batches, please remember properties of ellipse, mathematical property about its lattice rectum, its directrix, its eccentricity. Please use these things because it will help you in solving numericals here. ठीक है. Now using this, what you can write? T is coming out to be mu by k a root 3 by 2. Just put the value of a root 3 by 2. It is coming out to be pi square mu a cube by 2k. A we have already find out. A की value तुमने find out कर रखी है ना already. Just put it from there. अरे A की value we have find it ना. Just put it. How many of you got this equation? ये कितनों का आया था? ये तो सबका आता है. ये तो थर्ड लॉ है. ये तो बिना बिना उसके बिना किसी कंडीशंस के आएगा. इस कंडीशंस के आएगा बिना वो. How many of you got this thing? That A की वैल्यू भी तुम लिख रहे हो माइनस के बाई एप्सिलॉन. व्हाई? बिकॉज K डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इंटरेक्शन. ये ग्रेविटेशनल होगा तो क्या होगा? G. Yes or no? ये एक्स्ट्रा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो इट डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? कि हम सिंपली ए पे छोड़कर नहीं आ सकते कि टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब. ये तो है ही थर्ड लॉ. हमें इस ए को डिफाइन करना होगा, ए फाइंड करना होगा कि जो हमें मिला है. दैट इन आवर minus k is what? K is 1/4 pi epsilon naught. One more step you can go further and you can write this thing. It's up to you. But still this will satisfy the work. Have you understood? Please raise your hand. Everyone understood or not?
कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क एंड माइंड इट। इतना सारा चीज बिना रटे नहीं कर सकते एग्जाम में। दो चीज होंगी, एक तो कैलकुलेशन खूब होंगी इसमें, है ना, बड़े बड़े इक्वेशंस है, वैल्यू पुट करना है हर जगह। सो प्लीज मेमोराइज करना होगा, ठीक है। अगेन मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा, पीपल आर वाचिंग दिस थिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो, है ना, दिस इज गोइंग टू बी इन अ पब्लिक डोमेन, है ना। तो आई एम दोज हु हैव वर स्टार्टिंग ऑल्सो फिजिक्स, प्लीज माइंड इट कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअली तो ये समझनी है, उसके बाद याद भी करनी है, ठीक है। चलो, coming to this portion, a body is moving in inverse square attractive field traverse an elliptical path with eccentricity E and period D. Find the time taken by the body to traverse half of the orbit that is nearer to the center of force. Explain briefly why a comet spent 18% of its time. Yeah, blah 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 blah. जो भी है. What we have to find it? Kepler's second law लिखेंगे, obviously, है ना? Why we like Kepler's second law? Because we have to find out the time, area and time. देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है. Find the time taken to traverse half of the orbit, area time. That means यहाँ से तुम्हें hint मिलना चाहिए that we have to write Kepler's second law. What is second law? Also known as law of area. States that rate of change of area of planet around its orbit is constant. That dA by dt is constant. कितना आता है? L square by 2 mu. प्रूफ कर दिया हमने। अरे भाई ये कितने मार्क्स का है? ये 10 मार्क्स का है। इसको मैं कर दूंगा एक पेज में। What I will do? One page I will utilize in making the background. Make the background. अब इतना डायग्राम तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो मैंने 3 डायग्राम बना दिए हैं। You need not to do that. Why? Because I have to explain also ना। So ये तो सबको पता है ना। What will be dA by dt? ये r, ये theta. So what is the area? R square, area of sector r square theta by 2. यही तो होता है, पढ़ा है बचपन में। Differentiated r and 2 is common. Theta by dt is omega. R square by omega by 2. What is L? M r square. Sorry, हाँ, L is mu square by omega. यही तो होता है, I omega या mu square omega. Put it L equals to L by 2 mu. Where symbol has the usual meaning. Now coming to the question, the area traversed by the particle in our case is what? यही तो है। क्या बोल रहा है? सुनो अच्छे से क्वेश्चन। That find the time taken by the body to traverse the half of the orbit that is near to the center of force. Half the orbit near to the center of the force. This is center of the force. Half the orbit क्या होगा? यहाँ से यहाँ से यहाँ, half तो ही है। कितना एरिया कवर किया है? बस इतना। कैसे निकालेंगे? तो पूरे का एरिया कितना होता है एलिप्स का? पाई ए बी। आधे कितना होगा? पाई ए बी 2। उसमें से ट्रायंगल हटा दूं। ट्रायंगल कितना है? हाफ इनटू बेस इज व्हाट? ये बी और ये बी, तो 2b इनटू हाइट कितनी है? ये ए। इट विल बी कमिंग टू पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी ई। व्हाट विल बी टाइम टेकन? वी नो दैट कि एरियल वेक्टर इज कांस्टेंट, तो पाई ए बी पूरा करने में टाइम लगा टी, तो एक एरिया करने में कितना लगेगा टाइम? टी बाई पाई ए बी। तो एरिया में, इस एरिया में कितना लगेगा? इनटू ए। तो टी अपॉन पाई ए बी इंटू पाई ए बी माइनस ए बी बाई ई, जो एरिया निकाला था हमने यहाँ पर। Just put it here, you will get t equals to 1 by 2, 1 minus e by e. So time taken to traverse half of the orbit near the center of the force is this. Now, second question is, explain briefly why a comet spent 18% of the time taken. So what they want explanation mathematically or verbally? They want mathematical explanation. Why? We know that comet is not going to an orbit. Rather, the comet will move and go something like that. That it follow a parabolic path. This is the keyword that you have to understand. If this parabolic, eccentricity is what? 1. Put the value e. E की जगह 1 put करो and then solve it. 1 by pi, 1 by 2, it is going to be 0.180. Exactly, it is coming out to be this one. So we can say that comet spent only 18% of its time on the half of its orbit near the sun. अब मेरे पास पेज बच गया था. Then I have written this thing. Please try to understand. Application when you are writing, it is a value addition. ठीक है? But all the compulsory portion must be addressed before writing these things. So application of Kepler's law, predicting the position of the planet in their orbit, studying the motion of the celestial bodies. ठीक है? This is a kind of unique one. Earlier times, it is also used to find out astronomical clocks and calendar. देखा होगा तुमने, जयपुर में भी बहुत सारा है. So पहले की जो clocks और calendar बनते थे, उनमें इसका काम होता था. ना, ये तो सबने किया होगा. हाँ, ये कॉन्सेप्ट एक्सोप्लैनेट के लिए भी ट्रू रहेगा, किसी कॉमेट के लिए, मतलब
एक्सोप्लैनेट सर जो वो बाहर से ट्रेवल करते हैं, मतलब सन के पार्ट पे ही रहते हैं, मगर बहुत टाइम टाइम पे आते हैं, हाँ सन हाँ के हाँ हाँ, पास आते हैं। exactly वही। देखो, इट कैन नॉट फाउंडिंग एनी बाउंड ट्राजेक्टरी, समझ में आ रहा है ना? दिस सिंपली मींस दैट इट इज नॉट फाउंडिंग एनी बाउंड ट्राजेक्टरी। मान लो ये बहुत दूर जाकर अगर ऐसे करता भी है, समझ में आ रहा है? अगर ये बहुत दूर जाकर वापस भी आता है, देन आल्सो विल कंसीडर इट एज अ पैराबोला। समझ आ रहा है? वी से ना कि पैरेलल लाइंस आल्सो मीट एट इंफिनिटी, क्लियर और यस, नॉट? यस। So from that approximation, we assume that ki it is going to be a parabolic. ठीक है? It is mere an assumption in physics, if you can say. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द मोमेंटम इन टर्म्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ सर्कुलर। ये तो सबने किया हो, क्या ही करना है इसमें। वी हैव डिफाइंड एंगुलर मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, एल क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। पुट कर दो, बच्चा बच्चा वाला काम कर रहे थे। व्हाट आई हैव डिड एडिशनली, दैट आई हैव ड्रॉन द ग्राफ, आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये तो पढ़ लेना, इनमें तो कुछ भी नहीं बताया लाइक। ठीक है, लास्ट में टाइम बचा था तो एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लिख दिया हमने। नाउ कमिंग टू दिस वन, ये क्लियर है सबका ना? ये तो सबसे हो गया होगा आई गेस। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ये डाउट हो, ये सबको हो गया होगा, है ना? कुछ है ही नहीं, इजीएस्ट क्वेश्चन आज का। Second also, this is also easiest question, but you need to find out to write in a better way. If a particle mass m is in central force F r, so that the path must be plane curve, planar होगा motion, where r is in vector in direction of position vector r vector. Define करिए central force को। अब आ जाओ काम की बात। We know that L is equals to r cross mv, angular momentum है। Now we know that torque is defined as the rate of change of angular momentum, T equals to what? dl by dt. T is also r cross f. But here what do you find? R cross force is in the direction of r only. That means इनके बीच में एंगल क्या है? Either 0 और पाई, यही तो होता है। Either they are parallel or anti-parallel. In both cases, torque will be 0. If torque is 0, then dl by dt is 0. That means L is constant. So L constant हुआ तो उससे क्या समझ सकते हो? That conservation of angular momentum. So देखो इसको ये बच्चे आधे पेज में लिख सकते हैं, but you have to write in 2 pages. So what will happen here? दो कैसे इसको स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे? That means if L is conserved, L is constant, that means its direction and magnitude will be fixed. If this direction is fixed and it is perpendicular to R and V, देख रहे हो यहाँ पे R cross V cross product है, that means L is perpendicular to R as well as V. So we have to move in such a way. R is what? R is defining our path, trajectory. So we have to move in such a way that इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। भाई any vector can be represented by a plane. किसी भी प्लेन का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, यस और नो? अरे यस और नो? एवरी प्लेन हैज गॉट यूनिक डायरेक्शन, यस नो? सो इफ L is unique, that means this plane is unique, and in this plane only R has to be there. Why? Because L has to be perpendicular to R. That's why this R cannot leave this plane. That means its motion should be planar. That's what I have written here. That L is constant means its direction will be fixed, and using equation first, we can know that the L is perpendicular to the plane containing R and V. Hence, position has constraint to traverse. It has a constraint to traverse in such that L is always constant. That is, particle will always move in a plane or perform planar motion. ठीक है? टाइम था तो इतना लंबा लिखा, टाइम नहीं होता तो एक टाइम लिख देते हैं। One of the consequences of conservation of angular momentum, we have just seen Kepler's laws of areas. टाइम है, स्पेस है, लिख भर लेंगे। फिर और भी टाइम है, और भी स्पेस है, और भी दें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल फोर्स, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग पार्टिकल एंड फोर्स, मोशन इज प्लेनर, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, helps in finding various scattering parameter। रदरफोर्ड पढ़ा है तुम लोगों ने। helps in formulating laws like Kepler's and all these things। जो तुम्हारे सिलेबस में मैंने वही उठाकर डाल दिया एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की कोई वैल्यू एडिशन शीट वेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जस्ट व्हेन यू आर राइटिंग अपने नोट्स में कहीं ना कहीं उसको ऐड कर लो एक लाइन में। अच्छा ये टॉपिक है, इसका ये डेफिनेशन होगा, ये एप्लीकेशन होगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट वन। देखो एकदम एग्जैक्ट सेम है। शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज अ सेंट्रल फोर्स इज अ कांस्टेंट ऑफ द मोशन। अब लिखने का तरीका कैसा होगा देखना। व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स? गिव टू एग्जांपल ऑफ दैट। एग्जांपल देखो ऐसे देना। एग्जांपल लोग लिख आते हैं, एग्जांपल gravitational force, electrostatic force। भाई एटलीस्ट डिफाइन देम इन वन लाइन।
इफ यू आर सेइंग कि वो है, बता दो ना कि टू इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस, बस एक लाइन डिफाइन जरूर कर देना एग्जांपल को, क्योंकि इट इज स्पेसिफिकली मेंशन गिव टू एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो अगर इसके लिए 2 मार्क्स भी एलोकेटेड है तो एटलीस्ट 2 लाइन तो बनता है तुम्हारी तरफ से, है ना। अगेन वी हैव यूज्ड द सेम थिंग टू शो द प्लेनर। अब एल कांस्टेंट आ गया है ना। अब मैंने सेम ऊपर वाले चीज को क्या किया है, 2 पार्ट लिख दिया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू प्रूव दैट, यहां पे हमें ये नहीं प्रूव करना कि सेंट्रल है इसलिए प्लेनर है सॉरी, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंट्रल है इसलिए प्लेनर है, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। सो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? अगेन ये वही प्लेनर मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया है। और दूसरा क्या है, केप्लर्स लॉ ऑफ एरिया। अगेन दिस विल वर्क एज योर कंक्लूजन एज वेल। एवरीवन क्लियर? नॉट क्लियर? नॉट now this question, I know you can solve this question. Again, it's a numerical, but this is a standard numerical, standard format of question. ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया होगा, but how you write numerical question, that is important because it's asked for 10 marks. And I have just told you that do not dump any formula directly. Dumping is not allowed in UPSC. You cannot dump formula. So first we have defined central force. Obviously you can write in 2 lines. ठीक है? Obviously you can write in 2 lines, but what all things you should write, you have to derive that equation. So this formula, saying the equation of motion, this is angular momentum is constant, right? If you add this, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। Then what I have shown, देखो अच्छे से, मैंने सब कुछ लिखा है। अगर if you see this, but यहाँ इसके बीच का जो कैलकुलेशन है, 2 स्टेप मैंने हर जगह उड़ा दिए है। Those 2 steps are not relevant. वो हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए लिखते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 24/6, सॉरी, 24/6, यू कैन राइट 4 और यू कैन राइट 24/6, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 4। दिस और दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट यू कैन डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन योर हेड। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि एम आर डबल डॉट निकालना था तो आर डॉट ये होगा, क्योंकि आर ऊपर माना है हमने, है ना, तो आर डबल डॉट ये होगा। अब देखो यहां से डिफरेंशिएट करने के लिए यू विल नीड 2 लाइंस, आई नो दैट, बट अगर तुम लिखोगे तो कोई तुम्हें काट नहीं सकता कि तुमने 2 लाइन क्यों नहीं लिखी। व्हाई? बिकॉज यू राइटिंग टू मच हियर। u equals 1/r, then you put it, you will find this equation. So try to, देखो ये तो मेरा नीचे तक आ गया ना, यहां तक आ गया है ना। So what you will do, you will fit all this thing in one page. मैंने थोड़ा सा आलस किया है कि मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया। What I will do, तुम लोग क्या करना चाहिए, इस वाले को शॉर्ट करके इतने में खत्म कर दोगे, तो ये जो स्पेस बचेगा इसमें वो ऊपर आ जाएगा। जब वो ऊपर आ जाएगा देन यू हैव टाइम टू सॉल्व इट। अब तो सॉल्व करना आसान है, डी स्क्वायर यू अपॉन यू माइनस एम माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर 1/f/u। तो आर क्या गिवन है, के ई अल्फा थीटा, तो यू क्या हो जाएगा 1/k e to माइनस अल्फा थीटा, डी यू बाई थीटा क्या होगा माइनस अल्फा, बाहर डिफरेंशिएट करने आता ही तुम लोग को, डी स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर, जस्ट पुट द वैल्यूज, इफ यू पुट इट, इसका क्या आएगा अल्फा स्क्वायर के e to माइनस थीटा, इसका क्या आएगा अल्फा e to पावर माइनस अल्फा थीटा अपॉन के एम स्क्वायर। व्हाट इज एफ यू, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर, कॉमन क्या लेते हैं हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा e to पावर माइनस थीटा अपॉन के। ये है क्या, ये तो खुद में u है, पुट द वैल्यू u क्यूब। सो यू कैन राइट हियर f इज इक्वल टू व्हाट, u क्यूब मींस 1 अपॉन r क्यूब, यहाँ पर माइनस है और इट कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, f इक्वल्स टू माइनस k by r क्यूब, वेयर यू हैव टू comment on 2 things, first nature and how it is changing. So it's changing by r cube, so I have made the graph to show that, and negative I have, where negative sign shows, कुछ नहीं लिखा मैंने, attractive force is what, attractive force. So here the force law is given by this, जो पूछा गया था डाल दिया। Now which is central in nature, ये कैसा है central nature है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल फोर्स डाल दिया मैंने। अब तो वहां पे मैंने इतना स्पेस में लिखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल फोर्स, यहाँ पे मेरे पास कम स्पेस है, कब में लिखूंगा मैं। ये तो स्किल तुम लोग और अच्छे से आता होगा, जिसमें तो सीखा है तुम लोगों ने, है ना, हाउ टू राइट सेम स्टफ इन ऐसे फॉर्मेट और इन 10 मार्क्स, है ना। नाउ कमिंग टू लास्ट वन, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दी क्वेश्चन नंबर 20 आई गेस, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइंट
ये क्वेश्चन और जो हमने ये क्वेश्चन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, कौन सा था? ये वाला देख लो, इसका फर्स्ट पार्ट, चार्ज पार्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, वहां पर लिख दिया है, वहां it is mentioned that it is electron and is moving under a, so you will say do the same thing. ठीक है, I have also copy pasted the same thing, nothing to worry. ठीक है, so this is what we have discussed today. If anyone has any doubt, please ask me. ठीक है, next thing, I think next question is from rigid body, I guess, है ना? हाँ हाँ, sorry, gravitation and rigid body. So again 8 to 10 or 12 question, whatever जितना हो जाएगा, we will be discussing tomorrow. Again, your time will be 6 p.m. to 7 p.m. If I made any alteration, because देखो it's a free classes, so मुझे shift करना होता है बहुत सारे classes. So if I made any alteration, I will tell you on the Telegram group. ठीक है? Any doubt, anyone? If you have any doubt, you can ask here. Done? Everyone done? हाथ तो उठा दो, raise your hand if you are done. चलो. Okay. Thank you everyone. Good night. Bye bye. We will meet tomorrow.